Hello, welcome to Destiny classes, and we will see the all exam update, and we will see the how to score maximize our results. So see a student, first we have to be calm. When you will yourself very peaceful in mind, you will always give the your best. So in the exam you have to be effort such a way that you are putting your 100% effort. आप जितना अच्छे से शांति से मन को प्रेरित करके एग्ज़ाम को लिखिएगा, आपका रिजल्ट 100% आने वाला है. तो कभी भी एग्ज़ाम को अगर यू हैव टू बी क्लियर, सो व्हाट यू हैव टू डू विद द पीसफुल माइंड. एक शांति वाला माइंड आपको हमेशा अच्छे एग्ज़ाम को क्लियर करता है. ठीक है स्टूडेंट, जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है आपका वो देख सकते हैं. मार्क्स आपका 40 है, 2 आवर और 120 मिनट. ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है. तो हम लोग आज के सेशन में कुछ थ्योरी को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोर इम्पॉर्टेंटली आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं. तो देखिए, कभी भी एग्ज़ाम में आपका क्या होता है, यू हैव टू रीड द सिलेबस. आप सिलेबस को पूरे तरीके से पढ़िए स्टूडेंट. ठीक है, क्या क्या एग्ज़ाम में डिमांड है, क्या क्या आपके टीचर ने प्रिस्क्राइब किया है सिलेबस को. उसके बाद जितना भी PYQ है जो पहले के आपके सीनियर ने एग्ज़ाम को लिखा है उसको जाके सॉल्व करिए. जिस भी टॉपिक का हो बुक से आपका किसी भी तरीके से सॉल्व करिए. और फिर जो भी मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करो. मतलब कि उसमें कितने तरीके के क्वेश्चन दे हैव ए शाइन इन द आपका वेरियस पैटर्न. टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, दे आर इन नंबर ऑफ द वेरिएशन, एंड विद द वेरिएशन you can see the question. So we start with the some basic concept of the chemistry, and we will see the how the concept visualize, how the concept work. So first you have to know the basic of the physical quantity, and it say about the symbol for quantity, and then we have to name of the SI unit and the symbol for SI unit student. So you can see we have the length. So length symbol L, meter and a small m. Mass m, kg, kilogram, you can SI unit. See the detail. Time t, second s, small s. Electric current I, ampere, आपका A. Thermodynamic temperature T, Kelvin, K. Amount of substance N, mole, mol, SI unit. Luminous intensity IV, candela, and then CD. So this is how we have seen the length, meter, mass, kilogram, time, second, electric current, ampere, thermodynamic temperature Kelvin, amount of substance mole, and luminous intensity candela. So with this kind of set of knowledge, understanding, we solve the some set of question, and we will go through the question आपका demand. So first question is the SI unit of the energy. So SI unit of the energy joule. So we have to see what is the SI unit international your SI unit system. So SI unit energy is joule. Now we have the second question, what the other way of the representation of the 5 joule. So 1 joule we can write 1 Newton meter, 1 Newton meter. So 5 joule equal to 5 Newton meter, 10 joule is equal to 10 Newton meter, 100 joule is equal to 100 Newton meter. So this kind of set of the variation you will see in the exam. Now we have to see the color pattern. What is the primary color? What is the secondary color? What is the tertiary color? So see, the primary color is like red, yellow, blue color. Red, yellow, blue pattern is named as primary color. And then we have the secondary color, orange, green, violet. So mixture of primary we form the secondary, and mixture of secondary it form the tertiary. Red, orange, primary, secondary make tertiary. Yellow, orange. So primary and secondary combine each other and they form the tertiary compound or tertiary your color. So that's the pattern we have see in the observation for the making of the various set of color. So n number of color we can form with the help of primary, secondary, tertiary. So primary red, yellow, blue. Secondary you can mix up with the primary, you will get the secondary. Will mix up with the primary and secondary, you will get the tertiary. Red, orange, red, orange, green, yellow, green, yellow, and then the blue, violet, blue, violet. So these are the set of pattern we have to analysis for the simplification.
What are the various color of the light? So, we can see the various color of the primary color of the light, red, yellow, bluish. So, these are the question you can see and you can make, okay, these are the primary, these are the secondary, these are the tertiary. Which gas is released during the baking soda? NaHCO3 mixed up with the vinegar, acetic acid, CH3, COOH. So, what it happen when we have the baking soda and dissolve or mixed up with the vinegar, acetic acid? It releases carbon dioxide, CO2 gas. Okay, student. So, we can see which gas is released during the reaction is the baking soda is mixed up with the vinegar. So, we can see the CO2 gas is released. So, when baking soda is mixed with vinegar, the CO2 is released. Now, we have the next question, which of the following is formed on heating magnesium ribbon? Suppose we have magnesium and we are burning, so it formed the 2 moles MgO. So, we can say that it formed the magnesium oxide, 2 mole magnesium, 1 mole oxygen. 2 moles magnesium. Join or react with 1 mole oxygen, 1 mole oxygen. It form it form 2 mole magnesium oxide, student, magnesium oxide. Okay, so we can see this pattern. So, which of the following is formed on heating magnesium ribbon? Magnesium oxide. This is your magnesium and oxygen O2. So, magnesium ribbon this. So, 2 mole magnesium, and these are the like the molecular configuration, like oxygen in the red color. If we draw the oxygen on various like simulation, Gaussian, there are n number of software. So, reddish color oxygen, grayish magnesium. So, magnesium and oxygen 2 mole magnesium oxide. These are the things we have to know. Metal and non-metal. What is a metal? There are some similarity and there are some dissimilarity or difference. So, both metal and non-metal are made up of unit block of each thing is atom. Atom is the unit block of every matter. When we break any matter, it at certain level it go to the atom, and when we break atom, it go into subatomic particle, electron, proton and neutron. So, having similar structure, for example proton and neutron, for both are at the nucleus, while electron revolve around the nucleus. So, we can say the electron, suppose this is the nucleus. So, nucleus consists of the proton and neutron, and electron are the revolve around the nucleus. Okay, okay, straight. So, the like electron move in the cell, they are different set of orbit and electron revolve in the orbit. Okay. Both have the tendency to react and form compound. So, element react and metal non-metal react and form compound, metallic compound, non-metallic compound. Okay. C plus O2 CO2, Na plus O2 Na2O. So, that is kind metallic oxide, non-metallic oxide form. Now, metal are generally solid state, exception mercury and gallium. Mercury is in the liquid state and gallium is having, like we keep on the palm, it is stay in the liquid state. Now, non-metal are found in all in three state, like if we have the bromine liquid state, carbon solid state, oxygen your gaseous state. So, we can say all, and we have the metal in the solid and some other exception liquid mercury and gallium. Okay. Metal are heavy except sodium, potassium, magnesium, because they are very soft material. Okay. Non-metal are generally light in weight. Non-metal because they are having gases nature, so gases volume will be high, so it will have light in nature. They are hard and non-brittle. So, it means that if I have metal, iron, so very hard, copper,
very hard. Aluminium, very hard. So they are hard and non-brittle. It will not break. If I will use to break the rod of iron, will it break? No. So non-brittle. So except sodium, potassium, because they are soft materials. Soft material will easily break. Alkali metal are soft material. Okay. And the solid non-metal are hard but brittle. Suppose we have sulfur powder, we just dump it, sulfur will break. Okay, coal, we will hammer it, it will break easily, it will break. So coal, sulfur, phosphorus, it like powder form. So whenever we have the powder form, we can say it is a brittle. So that's the thing. Solid metal are in the brittle in nature. Now they are good conductor of heat and electricity. So we can say metal are good conductor of heat and electricity. Non-metal, they are the bad conductor of heat and electricity except graphite. We know that the graphite are the good conductor of heat and electricity. Now we can say that the metal are ductile and malleable. So we can stretch the wire and it form the ductile in the nature. Ductility say about the we can draw in the thin wire, and malleability says that it can drawn into thin sheet, thin sheet. And non-metal, they are neither ductile nor malleable. Sulfur we cannot stretch, coal we cannot stretch, we cannot elongate. So they are neither ductile nor malleable. Their melting point and boiling point are generally very high. So metal having the high melting point and boiling point. Non-metal, their melting point and boiling point are generally very low because they are gaseous in nature. Now we will solve some question. Which of the metal exists in the liquid state at room temperature? Just now we have seen the mercury, cesium. Okay. Now, which gas is used to fill balloon? We know helium. Okay. So we can see the all update. Mercury, gallium in the liquid state. This. Okay. Now, which gas is used in the fill balloon? Helium. Helium be used to fill balloon. No. Which of the reaction is not balanced? Okay. So which is not balanced? So we can say A is not balanced. So is option. Sometimes a student pick this is correct, but not. If you see 2H2 plus O, 2H2O, 4 hydrogen, it is okay. 4 hydrogen, it is okay. 1 oxygen here, 2 into 1, 2 oxygen. So not balance, not balance, not balance. Now C plus O2, CO2, okay. S plus O2, SO2, okay. Zinc, Zin, okay. H2, H2, okay. SO4, SO4. So zinc react with sulfuric acid, it forms zinc sulfate and hydrogen gas release. Okay. Now, which of the following method is used to for is not used for पेंटिंग? इनमें से कौन सा चीज़ आपका पेंटिंग के लिए यूज नहीं होता है? तो हीटिंग हम लोग नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है. बाकी ग्रीजिंग, पेंटिंग, आपका प्लेटिंग यूज होता है. तो आपका आंसर हो जाएगा टी. हीटिंग इज द करेक्ट, नॉट यूज फॉर द पेंटिंग. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक. आपका रेडियो एक्टिव इनर्ट गैसेस, तो रेडॉन आपका हो जाएगा, ठीक है. तो रेडॉन इज अ केमिकली एलिमेंट, symbol Rn, atomic number 86, is a radioactive, colorless, odorless and tasteless noble gas. It occurs naturally as intermediate step and in normal radioactive decay. So आप देख सकते हो यहाँ पे chains through which thorium and uranium slowly decay into lead. Radon itself is a decay product of radium. It is a naturally occurring radioactive gas and comes from the natural breakdown, radioactive decay of uranium. It is usually found in igneous rock, आपका उसमें मिलता है. And solvent in some cases, well water may also cause the source of radon. क्योंकि कुएं के पानी में बहुत सारे मिनरल इधर उधर से आपके आते रहते हैं, तो डिपॉजिट हो जाएगा, आपका मिल जाएगा. तो रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव, आपका कौन सा हो जाएगा? इनर्ट गैसेस. आर एन कितना नंबर है? आर एन 86, आर एन 86. ओके, we will move to the next question.
चलिए, when wax is burned in the form of wax candle, then water and carbon dioxide are formed. So you can see here water and carbon dioxide. So when wax is burned in the form of wax candle, then water and carbon dioxide are formed. Okay. Now, green plant while preparing food convert solar energy to which energy? If I have green plant, so they preparing food, so convert solar energy to chemical energy, and they will make their minerals. So green plant trap solar energy from sun with the help of their green pigment called chlorophyll. This energy is utilized to synthesize simple sugar like glucose by process of photosynthesis. Therefore, in photosynthesis, like color and light, solar energy from the sun converted into chemical energy. Okay. Now, we have the next question. The line perpendicular to the surface at the point of incidence is known as. So, the line perpendicular to the surface, this is the perpendicular to the surface. Okay. The line perpendicular to the surface at the point of incidence is called normal. तो स्टूडेंट इसको नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल लाइन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. So the line perpendicular to the surface at the point of incident is called normal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेम द कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तो उसको आपको ब्राउमैन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है. द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ किडनी which is mainly responsible for the production of urine is the nephron, ठीक है. नेम द कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. तो उसको आपको ब्रोनेन. द कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन इज नोन ब्रोमैंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है. इट इज थिन बॉल आपका स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द ब्लैंड इन नेफ्रॉन. इट यूज इन द हेल्प इन द फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन वेयर द ब्लड इज फिल्टर एंड ग्लो आपका मेर आपका यूरल कैपिलर यूज होता है एंड द नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज क्रिएटेड विद इन ब्रोमैन कैप्सूल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh, सिंपल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो आपका हाइट से आपका क्या होगा, काइनेटिक में मूव होगा. तो उस तरीके से आपने देखा था सिंपल पेंडुलम में पोटेंशियल काइनेटिक मैक्सिमम, ठीक है. इस तरीके से मैक्स पोटेंशियल, मैक्स काइनेटिक, मैक्स पोटेंशियल. सपोर्ट बना दीजिए. ठीक है. The gravitational potential energy change into kinetic energy. The equation gravitational potential energy mgh, where m is the mass of kilogram, g is the acceleration due to gravity and h is the height. ठीक है. नेम द एलिमेंट यूज इन मेकिंग स्टोरेज बैटरी. बैटरी के स्टोरेज में क्या क्या यूज होता है? तो मेनी एलिमेंट यूज इन द बैटरी आपका लिथियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल, बैंडियम, कैडमियम, बहुत सारे. कैन बी यूज टू मेक मेनी टाइप्स ऑफ द बैटरी. लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर, बहुत सारे बैटरी होते हैं. सोडियम आयन, सोडियम एयर, मैग्नीशियम एयर, जो भी लिखिएगा सब यूज होता है. व्हाट डज द रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम? ठीक है. CaO प्लस आपका H2O आपको क्या बना देगा जी? CaOH हॉल्ट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सिंपल आपको ये बोलना है. सो CaO प्लस H2O एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? कंटेनर गर्म हो जाएगा, ठीक है. तो क्विक लाइम रिएक्ट विथ water to form slake lime CaOH hall twice. Quick lime CO react with water to produce slake lime CaOH hall twice. CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपका H2O से रिएक्ट करके कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ स्लो केमिकल रिएक्शन. द रिएक्शन ऑफ द क्विक लाइम विद द वाटर एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस. इट इज अ फास्ट केमिकल रिएक्शन. ओके. डिफाइंड मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी पे वही आ जाएगा आपका स्टोरी. मैलिबिलिटी में स्ट्रेच करेंगे, डक्टिलिटी में आपका
ड्रॉ वायर, तो मैलेबिलिटी थिन शीट, एंड डक्टिलिटी में ड्रॉ थिन वायर, okay. Now what is the mechanical energy example? Mechanical energy is sum of potential plus kinetic, mechanical energy, potential energy plus kinetic energy, student. So it is the energy associated with the motion and position of an object. Example आपका रहेगा moving vehicle possesses mechanical energy in the form of kinetic energy. तो जो भी आपका moving रहेगा उसमें potential kinetic चलता जाएगा. अ कंप्रेस स्प्रिंग उसमें क्या रहेगा मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो जहाँ पे आप देख लीजिए उस तरीके से मोशन रहेगा, झूला वाला पोटेंशियल कनेटिक चलता जाएगा. तो उस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो. प्रॉपर्टी ऑफ बेरियम, बेरियम इज अ केमिकल एलिमेंट, इट हैज़ अ सिंबल बेरियम का Ba, इट हैज़ एटॉमिक मास 56, इट इज़ द फिफ्थ एलिमेंट इन द ग्रुप 2 एंड इट इज सॉफ्ट सिल्वरी आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे, तो बाप आपका बेरियम हो गया 56. सारे एलिमेंट का आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको करना है सर जी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक 20 तक तो याद ही कर लो. हाइड्रोजन 11, हीलियम 24, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरॉन 511. खूब प्रैक्टिस करिए, आपका मार्क्स तो आना ही है. कार्बन C612, नाइट्रोजन N714, ऑक्सीजन O8 16, आपका फ्लोरीन 919, आपका फ्लोरीन के बाद नियॉन 1020, ठीक है. सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, ठीक है बच्चे लोग. फिर आपको क्या याद करना है सर जी, एल्युमिनियम Al27, सिलिकॉन 14 28, फास्फोरस 15 31, सल्फर 16 32, क्लोरीन 17 35.5, आर्गन 8 एयर 18 40, पोटासियम 19 39, कैल्शियम 20 40, ठीक है फ्रेंड. स्कैंडियम, इसके बाद आप ट्रांजिशन एलिमेंट का सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करिए. टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, फिर आपका निकल 28, फिर आपका कॉपर 29, जिंक 30, ठीक है स्टूडेंट. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो. देखो कोई भी आपका सिलेबस को प्रैक्टिस करो. फिर से वही आपका, फिर से वही गीत मैं गाता हूँ, सिलेबस PYQ एंड मॉडल पेपर. हम लोग के साथ वीकली टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं. वीकली हमारे साथ टारगेट कोर्स एंड क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं. IIT JEE नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड यू विल इनरोल, अगर इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है तो कॉलेज का स्टूडेंट पढ़ सकते हैं सारे. केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के कोर्स भी कर सकते हैं. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच एंड डू आस्क फॉर एनी क्वेरी, डू आस्क फॉर ऑल क्वेरी, ठीक है. तो इस नंबर पे कॉल करिए और हम लोगों से जितने करिए पूछिए. सो दिस इज ऑल. थैंक यू सो मच.